the same chapter, the triumph of surgery. And at that day, we covered almost half part of the story. That at last, Vicky was sent to vet hospital in the hospital of Dr. Harriet. Up till here, whosoever were there at that day must have understood and know about their story. And while going to the story, to the hospital, a number of, let's say, things were kept into the vehicle, car of Dr. Harriet, like different kinds of cushions, different kinds of coats and dress, and different kinds of utensils for the utility of the dog so that he can be comfortable. Whereas the fact is that he was not in need of any sort of these things, isn't it? The basic thing is that he was in need of only, let's say, controlled diet and good amount of exercise, running, jumping with other dogs, which can, let's say, enable him, make him a very nice man. Oh, sorry, not nice condition of that very dog. Now come forward that next part, that at the surgery, the household dog surged around me. Now the dog is telling me, 1 minute, wait. Now the dog is in the veterinary hospital, and there are already a number of dogs were there. Ongoing now, Rohit, Bhuvaneshwari, and whomsoever present there. Please listen. Rohit, Tejas, and Ayush. Ongoing, beta? I hope listening. Bhuvaneshwari. Listening now? Reply? Rohit, we are gone. Bhuvaneshwari. Okay. Now reply fast. Okay, no problem. But you can at least, let's say, reply in chat box, isn't it? That you are listening or not listening. Okay, Tejas. Thank you. Who is Tejas? Show your face, please. Tejas, beta? Show face. The dog is now in the hospital. There are already a number of dogs were there. And when this dog, Tricky, came into that very hospital, all the dogs started surrounding him because they got a new dog. Tricky looked down at the noisy pack, and pack means group of the dog with dull eyes because he was ill. He was lazy. He was not in a good physical condition, and that's why he was looking to all the dogs, but with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. And after some time, yes, no problem. Should I open you? Then you will, let's say, I shouldn't think, let's say, you should create any sort of problem. I will unmute you, but take care. No sound should come. चलो कर दिया ध्यान दे रहा हूं and after some time, because he was dull, in a diseased state, in a sick state, so he let's say motionlessly again, whatever the condition was there in the home, his personal home with Mrs. Pumphrey, in the same way here also came, looked at the dogs, other dogs, but after some time, he again let down on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object
and ignored him. In the beginning, all the dogs came and started trying to, let's say, have the company of that very dog. But when other dogs found that he was not reacting in any way, not responding, they sniffed. वो लोग सूंघते हैं, थोड़ा बात करते हैं. And after that side ignored that, oh, he's not interested and not responding, and that's why they ignored and went away from there. Decided he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him, sorry, I made up a bed for him in a warm, loose box. Hmm. गर्म रहना चाहिए, मतलब ठंडा नहीं रहना चाहिए, उसको सर्दी नहीं लगे, और उसको बहुत कारपेट और गद्दा और तरह तरह का बिछावन नहीं चाहिए, इसलिए उसको ना लूज बॉक्स जो होता है जैसे कार्टून वगैरह, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लीप. Number of, let's say, boxes were there, a kind of kennel, a kind of cupboard, and in it, he was also provided one, let's say, warm but cozy, comfortable, let's say, bed was made for him, a home, a new home, a kind where he can rest. For 2 days, I kept an eye on him continuously. Dr. Harriet was observing that very dog. Keeping an eye on means observing, taking care, giving him no food but plenty of water. No food was given to him because he has already consumed a good amount of food. So, what did he do? That water is very much essential, and he was, let's say, locked into that very box. He couldn't get any sort of food from anywhere, only water was provided to him. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. And after what happened when the fats started going down into his body and no new fats entered his body because he was devoid of the food, what he did that he started showing some sort of, let's say, physical activity, physical, let's say, stamina, and showing interest, looking here and there. Otherwise, he was laying dull and lazy. And on the third day, he began to whimper and he heard the dogs in the yard. And when third day passed, or you can say on the third day, he, let's say, become a bit vibrant and started showing interest and wanted to look at the dogs and in the surrounding as to what was there. When I opened the door in which he was kept, the box was open. Triti trotted out, धीरे धीरे वो निकला, and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. Means a number of dogs were there, and when he came out of his box, all these dogs, like Joe, greyhound, and other friends, started surrounding. भाई सब बच्चों में एक नया बच्चा आ गया ना, दोस्ती होते हैं, उससे घुलते हैं, मिलते हैं. In the same way, here also, the dogs were, let's say, surrounding around him to have friendship and play and have company of that very dog. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब थोड़ा देरी तो होता है धक्का मुक्की, प्यार दुलार खींचातिरी किया गया दूसरे कुत्तों के द्वारा. And after that, again, all the dogs went into the garden. A good, let's open space was there. The garden was there, and every day all the dogs were going here and there enjoying. That is the life of the dog, that they should be in physical activity. Tricky followed them, and wherever all those dogs went, Tricky also went into the garden, rolling slightly with his surplus fat. अभी 2 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ फैट्स घटा, क्योंकि खाना उससे दूर रखा गया था, नया फैट्स बढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो फिजिकल एक्टिविटी में आया. Started walking and playing with the other dog. Later that day, I was present at feeding time. Feeding time means at the time of the food. I was carefully watching and observing that very dog and all the dogs. All the dogs were in good physical condition. Only he was to be taken care of, and that's why he was there. The doctors were there. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. One dog was there and he was slopping. The way the dogs, let's say, eat, they make a lot of sound, and that is known as slopping the food into the bowl. All the dogs are given food into bowls. One dog was there and he started, let's say, slopping. There was the usual headlong rush followed by the signs of high and speed seizing. And whenever the food was came, all the dogs were coming, and there was a kind of contest to eat more and more. And that's why there was a bit of rustling and some big sounds, high sounds were there of the slopping of the food. Chop, 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 chop. उन लोग खाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आदमी को जब खाना चाहिए उस समय बात नहीं करना चाहिए और ना कोई साउंड निकलना चाहिए. लेकिन जानवर कुत्ते, उनको सेंस नहीं है. वो जब खाते हैं चप चप, और जब 10-20 कुत्ते खा रहे हैं तो आवाज निकलना शुरू होती है. Every dog knew
that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his game. कुत्ते कुत्ते के पास दिमाग है, सबके पास दिमाग है, कुत्तों के पास भी दिमाग। कुत्ते जानते हैं अगर हमने खाना में लेट किया तो लास्ट पार्ट हमको कम मिलेगा, या लास्ट पार्ट के लिए हमको थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट that in the beginning they should eat in the maximum account. So there was a kind of race and some sound was there of the way of their eating. And I hope understanding चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, समझ रहे हो? बोलो। 3-4 बच्चे आते हैं क्लास में। रोहित आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो? यस सर। बंद करो। आवाज साफ है? और एनी प्रॉब्लम इज देयर? क्लियर कट साउंड इज गोइंग ऑन? यस सर। When they had finished, what they had finished, they stand here for all the dogs in that very left hospital. And those dogs were not diseased or sick, they were normal dogs. Okay, and when they had finished, what finished? Their food. Tricky took a walk around the shining balls. Why the balls were shining? Because it has been licked by all the dogs. कुत्ते का आदत है पूरे चाट चूट करना, बर्तन को एकदम चमका दिए, साफ कर दिए, लास्ट अमाउंट तक खाए, दाना तक। और उसके बाद टिक्की आया जब भीड़ हट गया तो, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स वेयर केप्ट, नॉट ओनली वन बॉल और टू बॉल्स वर देयर, एंड ही वाज लिकिंग स्लोली एंड स्लोली। 2-3 दिन बाद इसका हल्का भूख जागा। तो मैम पहले ही बोल दिए थे कि कुछ भी नहीं खाते हैं, इसका फेवरेट डिश भी दे रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, पेट में जगह रहे तब ना। अब 3 दिन जब ये भूखा रहा है तब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। इसलिए बीमारी में ना आदमी को ज्यादा खाना नहीं खाइए, बल्कि खाना बंद कर देना चाहिए। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling this way towards it. And next day, what happened? On the fourth day, a separate bowl for the food of Tricky was kept, and he came and started, let's say, showing interest and eating slowly and slowly, which showed that he was on the right track, that he was improving, that he was in illness was going, and he was becoming normal. From then on, उसके बाद से क्या हो गया? His progress was rapid, means with grace speed. He has started, let's say, I have been progressing, improving. He had no medicinal treatment. See, the name of the chapter is The Triumph of Surgery, which means that someone or the dog has gone through surgery. सब चीर फाड़ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं अभी तक उसको एक पिल भी नहीं देते हैं। बल्कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा हो जाता है ना, भूख वगैरह नहीं लगती है तो थोड़ा सा एंजाइम से एक टैबलेट आता है, सिरप भी आता है, उसको दिया जाता है कि उसको भूख जाए। यहाँ तो जरूरत से ज्यादा ये खाना खा लिया इसलिए उसको प्रॉब्लम हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब बोले दैट फोर्थ डे ही शोड इंटरेस्ट एंड ही स्टार्टेड, लेट्स से, ईटिंग समथिंग। But the fact is that he has not been given even a single piece of any tablet or medicine of any kind. But all day he ran about with the dog and he became light and his illness 50% gone. And that's why now he is playing with the other dog in the entire premises of the hospital. Either let's say yard is there or the boxes are there or the garden is there. Joining in their friendly scrimmage. And all the dogs were, let's say, I mean, snoring and growling and barking. And he be already a dog, and that's why he showed his natural course of action with the other dogs. He discovered the joys of being bowled over, है ना, एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, फ्रिस्क कर रहे हैं, ब्रिस्क कर रहे हैं, ट्रैम्प ऑन, कोई कुचल रहा है, एंड स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट, हर थोड़ी देर पर एक नया नया मेंबर आया है और उस मेंबर के साथ दूसरे कुत्ते भी इसको इसको लपेट रहे हैं, इस पे दौड़ रहे हैं, इसको कुचल रहे हैं, और ये भी उसी तरह से कर रहा है। He became an accepted member of the gang, and gang means not a bad gang. Gang means the pack of the group of the dogs. And now all the dogs have got saturated with him. They understood that he is a new member, and he also showed interest in them, and all the other dogs also showed interest in him. An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meals, and whenever the meal time was there, onwards, just like a tiger, he was also, let's say, what doing? Fighting among others to get his, let's say, doge.
rats in the old hen house at night. हम ये तो कभी देखा नहीं है, ये तो टाइल्स वाला मकान में बेड पे रहा है, और बहुत सारे कुत्तों को आदत होती है, वो चूहों का शिकार करते हैं, चूहे को खाते हैं. एंड ही नाउ स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग in the garden. He had never had such a time in his life. See what happened that इस तरह का खुला जीवन, नेचुरल जीवन वो उसको कभी मिला ही नहीं, और आज इसको काफी मस्ती आ रहा है. और जितना दौड़ धूप करेगा, जितना दौड़ेगा, उतना उसके सेहत के लिए अच्छा होगा, बॉडी में एक्सरसाइज होगा और खाना नॉर्मल मिलेगा. जैसे रोटी सब्जी होता है, रोज खाली पूरी खा रहे हैं और स्वीट्स ले रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और तुमको चीज और पनीर खा रहे हैं ना, तो वो सेहत को बनाने के बजाय बिगाड़ देता है. जैसे ट्रिकी का बिगड़ गया था, इसको तो नेचुरल खाना मिल रहा है सादा सादी, और यहाँ पर काफी दौड़ने धूपने का समय है, सो ही बिकम ऑल राइट ऑल द वाइल. और ये 10-20 दिन जो बीता समय, द टाइम पास, मिसेस Humphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. यहाँ से जैसे वॉर रूम से आता है ना, युद्ध में कहाँ प्रहार हुआ, कहाँ अटैक हुआ, कितने मरे, कितने घायल, इस तरह से ना, in one day minimum, let's say 10 to 20 times she was ringing to doctor as to know, or you can say to know the condition of her dog. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly on his correct coat, warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अच्छा word है, convalescing, improving health after illness is known as convalescing. और मैम को ना ये indirect answer देता था, because man was all the time, let's say, asking whether his bed and the, let's say, dress was changed or not changed, and at night he was given, let's say, proper food. All the questions were those means diverted, and rather in a shortcut, in a nutshell, in a shortcut, the doctor was replying that the one thing is there, that a good sign, good news is there, that the dog was, let's say, I mean, improving, and he is now completely out of danger. Now he will survive, and within, let's say, I mean, next 10 to 20 days, he will be complete and normal dog, normal fellow. ऐसा उन्होंने जवाब, बार बार 10-20 बार फोन करती थी और पूछती थी कपड़ा बदला है कि नहीं, बेड बदला है कि नहीं, ढंग से सोया कि नहीं, उसको हॉर्लिक्स मिला कि नहीं. तो ये सब क्वेश्चन को वो राउंड अबाउट में आंसर देते थे, और ओनली वन आंसर वाज गिवन टू हर, that now he is all right, out of danger, and now he is improving fast. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time. देख रहे हो, जैसे ही वो समझी कि इम्प्रूव कर रहा है ना, तो वो सोची अब इसको खाने की जरूरत है, तो घर से अपने नहीं आती थी, लगता है स्टाफ से, नौकर चाकर से. शी वाज सेंडिंग देम व्हाट, dozens of eggs minimum, एक बार में 2 दर्जन अंडा भेज दिए, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और बोलते हैं हम लोग 8-10 मेंबर थे यहाँ, अपने थे डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे लोग थे. तो ये लोग क्या करते थे ना, कुत्ते को तो देना नहीं, कुत्ते को देना का मतलब है उसके लिए पॉइजन हो जाएगा, तो ये क्या करते थे, अपने में मिल बैठ के खाते थे. दे वर वेरी मच हैप्पी, and they wanted that this dog should remain with them, should live in the hospital for a long time, so that in free of cost they can get all these things. समझ में आ रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा. Why the different stops and doctor wanted that Tricky should live for a long period of time in the hospital? And simple answer is because Mrs. Pumphrey, or let's say mistress, or sorry, his mistress, the mistress of the Tricky, or the dog, was sending good amount of healthy and nutritious food, like 2 dozens of eggs. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. और उसके बाद कुत्तों को ना विदेशों में थोड़ा बहुत वाइन दिया जाता है, और सर्दी ज्यादा होती है, तो सर्दी को रेसिस्ट करने के लिए तो वहां से 2-2 बोतल वाइन भेजते थे, और इन लोग एंजॉय कर रहे हैं. हम लोग के लिए वाइन बहुत उल्टा सीधा चीज होता है, और विदेशों में ना छोटे बड़े सबको दिया जाता है, बिकॉज चिल कोल्ड इज दिया, the temperature is in minus degree, and that's why they are given, and they are now enjoying the horlicks, the sweets, the egg, the wine, and they wanted only one thing: Tiki shouldn't go from this very hospital, rather he should stay, so that free of cost they should be getting all these things. It was to enrich Tricky's blood. और मैम सोचती थी इसको एग और वाइन और तरह तरह का अच्छा फूड देंगे तो इसके बॉडी में खून बनेगा और ये अच्छा हो जाएगा. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal.
और बोलते हैं हम लोग के यहाँ तो अब पार्टी होने लगा, जैसे सेरेमनी होता है, रिसेप्शन होता है, शादी होता है, छुट्टी होता है, गृह प्रवेश होता है। और विदेशों में ये विदेशी कहानी है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम लोग के यहाँ सेरेमोनियल होने लगा है, एक तरह से सेलिब्रेट होने लगा हमेशा लंच टाइम में। क्यों? क्योंकि वहां से खूब खाना आ रहा है। और लंच के पहले, लंच के बाद, खाना के पहले, खाना के बाद क्या हो रहा है, इन लोग खूब ड्रिंक करना शुरू कर दिया। मस्ती आ रहा है इन लोग को। ठीक है। इट वॉज टू एनरिच। We could hardly believe it when the brandy came to a final age on Ricky's confusion. वाइन के बाद एक ब्रांडी एक होता है, एक तरह का शराब, मेरे को भी पता नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन ब्रांडी आता है, वो कॉस्टली होता होगा। तो शुरू में तो ये वाइन भेजना शुरू किए, और बाद में भेजना शुरू कर दिए क्या, ब्रांडी भेजना शुरू कर दिए। और इन लोग को मजा आ गया। हम्म। रिकीज कंस्टिट्यूशन। और ये सिर्फ भेजा जा रहा था मैम की तरफ से, इनके मालकिन की तरफ से, ये इम्प्रूव कर जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drank. और इन लोग ना अपना उस ड्रिंक को खूब एंजॉय कर रहे थे कई रात तक। जनरली रात में लोग ड्रिंक करते हैं, रात को ये लोग ले रहे हैं। There were days of deep content, और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। They were very much satisfied in all respect. First, that trick was improving. Secondly, they were getting good amount of foodstuffs and drinks free of cost, so they were happy and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ठंडा का देश है, कैसे आग जला के हम लोग उसको तापते हैं, इसी तरह इन लोग भी तापते थे। और रात को जो कैंप फायर होता है, कैंप फायर करने के समय इन लोग ड्रिंक कर मस्ती में है। अब बोलते हैं ये एक लालच हो गया हम लोग के मन में, आ गया टेम्पटेशन आ गया। देखो लिखते हैं, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट केस। दे वांटेड दैट ट्रिकी शुड लिव हियर फॉर ए long time or permanently. Should that time and again the same thing, they can get all these foodstuffs and wine and drink free of cost. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. And time and again, ma'am was making phones, talking to the doctor and asking about his, let's say, latest condition. And later on, the doctor also told that no, Tricky is all well and fine. Hmm. And the doctors have told that now he is in such a good condition that you can come and collect him. Better take him away. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal, and black metal हो गया एक महंगी गाड़ी, जैसे तुम्हारा इनोवा वगैरह है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी गाड़ी है, एक लंबी काली गाड़ी, लंबोर्गिनी वगैरह ना, मर्सिडीज वगैरह गाड़ी है, वो तो पैसे वाली थी। तो बोलते हैं जैसे ही हमने फोन पर उनको बोला that any time you can collect it because his improved condition had improved. In the meantime, after some time, a 30 feet gleaming black metal river outside the surgery. Outside the surgery means outside the hospital. The chauffeur, प्रोफेशनल ड्राइवर को बोलते हैं शोफर, जिसका पेशा ही है ड्राइवरिंग करना। जैसे तुम्हारे बस के ड्राइवर है, तुम्हारे घर में ड्राइवर है, और हम और तुम कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उस समय हम लोग ड्राइवर हो गए। हम लोग उल्टा बोलते हैं, कोई भी गाड़ी जब ड्राइव कर रहा है वो ड्राइवर हो गया। और कोई प्रोफेशनल रूप से, कमर्शियल रूप से उसका पेशा ही है ड्राइवर, ड्राइव करना, तो वो शोफर हो गया। शोफर का अंडरलाइन करो और शोफर को याद रखो। ठीक है। द शोफर ओपन द डोर and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. इतनी बड़ी गाड़ी है ना, उनको ध्यान से देखना पड़ा कि इसमें मैम कहाँ। बड़ी महंगी गाड़ी है, लंबी लंबी, उसमें देख रही कि वो भी बैठी हुई है। कब? When the driver opened the door of the car, that let's say I mean expensive and costly car. Hmm? Her hands were tightly clasped in front of her, ऐसे करके हाथ बैठी, or she wanted only have a look, glance, and glimpse of the dog. Chuki, more than let's say 1 month has passed or 15 days has passed. Her lips trembled. उनको ना हाथ पैर सब हिल रहा है, होठ, लिप्स हिल रहा, कैसा है, नहीं है, इतने दिन से देखे नहीं है। Oh, Mr. Hogg, do tell me the truth. Is really better? कुत्ता तो अभी कहाँ? कुत्ता तो बेटा अभी अंदर है, और सामने गेट के पास मिल गई तुम्हारी कौन, मैम।
तो मैम से बोल रही है, मिलते सामना सामनी जब हुआ ना, when she was face to face with the doctor, she only asked only one condition, that before I can see the dog and collect it, please tell me, is he all well or not, is he fine? Yes, he's fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. And the doctor told that, okay, don't bother to come out of the car. Rather, I am going inside, and from there I will bring the car and hand it over to you. ठीक है साहब. I walked through the house into the garden. और बोलते हैं हमने फिर घर से घर गए, अंदर गए. उनका घर भी था, हॉस्पिटल भी था, नर्सरी भी है जानवरों का, सब कुछ उसी है. गार्डन को होते हुए वो गए. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky. Means number of dogs were there. Already you know that the number of dogs were there, and they are all were jumping, frisking, some were moving round and round, some were, let's say, trampling, and some were, let's say, I mean, involved into different types of physical expertise. And in between it, one dog was also there, and this dog was which was a golden dog figure who was tricky, and he was in a very well condition, and he was enjoying playing, frisking, jumping. In 2 weeks, 15 दिन करीब यहाँ रहा वो. He had been transformed into a lean, hard muscle animal. ये होना चाहिए आदमी. ज्यादा फूला हुआ सूजा हुआ बॉडी फैट का नहीं होना चाहिए. हार्ड मसल, मस्कुलर एनर्जी होना चाहिए. दुबला ही है तो है, उसके बॉडी में ना स्टेमिना होना चाहिए. हार्ड मसल एनिमल. ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक. और पैक का हो गया मतलब क्या, दूसरे जानवरों के सामने वो अच्छा मेंटेन कर रहा था. जैसे ऑल द डॉग्स वेर बिहेविंग, नॉट लाइंग एट अ प्लेस एंड जंपिंग एंड क्वर्लिंग एंड फाइटिंग एंड मूविंग एंड running behind the mouse to catch it. He was also doing the same thing. Stretching out in great bounds. लंबा लंबा वो जंप ले रहा है. His chest almost brushing the ground. इतना है उसका टच कर रहा है उसका चेस्ट ग्राउंड में. I carried him back along the passage to the front of the house. और ये बोलते हैं कि फिर आपने क्या किया, उसको उसको पकड़ के लाया, पैसेज में लाया. द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर. ड्राइवर तो ड्राइवर है, वो तो स्टाफ है बेचारा. वो क्या किया है कि चुपचाप वो खड़े हैं दरवाजे के पास, कार के ड्राइव के पास. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्टेक्स, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स. एंड द मोमेंट, अभी कौन आता है जी? एंड द मोमेंट ट्रिकी सॉ हिज मिस्टेक, वो तो गाड़ी भी पहचान लिया होगा, गाड़ी में तो उसका अंदर से उसका रिलेशनशिप है. और जैसे ही गाड़ी में देखा मैम को अपनी ना, वो इनके हाथ से छुड़ाया, एक लंबा जंप लिया और सीधा मैडम के गोद में गाड़ी के अंदर. He took off from my chauffeur means भुवनेश्वरी. आई हैव टोल्ड यस, बट यू हैव टू आस्क. जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, जिनका जैसे हम लोग टीचर है प्रोफेशनल, ठीक है, तो जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं उनको शोफर बोलते हैं. क्लियर? जैसे तुम ड्राइव कर रही है स्कूटी या कार, तुम ड्राइवर नहीं है. और जब किसी का पेशा ही हो गया कि ड्राइवर ही बनता है, जैसे तुम्हारे स्कूल के बस ड्राइवर हैं या घर में ड्राइवर होते हैं जिनको हम लोग हायर करते हैं, वो शोफर हो गया. यही डिफरेंस है शोफर और ड्राइवर. ड्राइवर एनीवन हु इज ड्राइविंग एनी व्हीकल, एंड शोफर स्पेशल ड्यूटी ऑफ वर्क इज टू ड्राइव. तो ये सीखा. सॉ हिज मिस्टेक्स, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स. टुक ऑफ मतलब वो उड़ चला वहां से, फ्लाइट लिया फ्रॉम माय आर्म इन अ ट्रिमेंडस लीप. बड़ा लीप लिया है, जंप एंड सेल्ड इनटू मिसेस हम्फ्रीज लैप. और डायरेक्ट पैसे से लेके गाड़ी के अंदर. वो रोज ऐसे ही करता होगा शुरू से, वहां उसका आदत है. पुराना 15 ही दिन ना अलग हुआ है, बाकी तो है. सीधा उनके गोद में गया. शी गेव ए स्टार्टल्ड ऊह. इतना कस के झटका मारा, और उनको खुशी भी है, सामने कुत्ता आ गया, कुत्ता ठीक ठाक है. And then had to defend herself as he swarmed over her. और फिर कुत्ता तो लपेटना शुरू करता है ना, वो पूरा हक करेगा, किस करेगा, बॉडी में लपेटा मारेगा, licking her face and barking. He was continuously barking. और कुत्ते प्यार से जैसे बच्चे करते हैं वो लिक भी कर रहा है उनके बॉडी को, उनके फेस को. कहीं पर वो शिकायत कर रहा है, इतना दिन से आप कहाँ थे, क्यों मेरे को छोड़ दिए, हालांकि उसके भला के लिए छोड़ा गया. Isn't it? हो गया, समझ में आया? तो टाइम भी बहुत बचा है, 5 मिनट, स्टोरी भी फिनिश हो गया. खैर वेट. वर्क कर रहा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. बाकी सारा इनका सामान था, कुत्ते का सामान था. सामान में क्या क्या है तुम लोग को याद रखना.
जैसे हो गया ये तुम्हारा, क्या बोलते हैं, बेड हो गया जो वहां से आया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड। ये तो कुत्ता और उनके मालकिन का मिलन हो रहा है गाड़ी के अंदर, और इन्होंने शोफर को बोला कि सारा सामान अंदर डालो। आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स। ये इसको अंडरलाइन रखोगे, ये कहीं पर भी आएगा। ये तो जाने के वक्त दिखाया जा रहा, शुरू में भी दिखाया गया था। ये सारा सामान को पैक कर रहा, बेड्स को, टॉयज को, कुशंस को एंड बाउल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज। इसमें से कोई भी सामान का जरूरत ही नहीं पड़ा, यूटिलिटी नहीं था। कुत्ते के जैसा रहने दो, तो वो नॉर्मल रहेगा। ज्यादा लाड प्यार दुलार और बिछावन और खाना, रिच रिच खाना दोगे, वो देखो मरनासन हो गया था। It was at the point of let's I mean death, which was not good thing. As the car moved away, फिर गाड़ी वहां से चली। मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से देख रही है डॉक्टर साहब को। टीयर्स शोन इन हर आईज। शी वाज वेरी मच इमोशनल, शी वाज हैप्पी आल्सो, एंड शी वाज सैड आल्सो, एंड शी वाज थैंकफुल टू द डॉक्टर। हर लिप्स ट्रेम्बल, इतनी खुश थी ना, वो सेंटिमेंटल हो गई, इमोशनल, started weeping, and tears started, let's say, I mean, falling down from her, let's say, eyes. Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? Means you have done a good job, noble job, very important job for me, that you became, you made the dog, let's say, I'm in normal, and I am heartily, forever, deeply thankful and grateful to you. This is a triumph of surgery. And she thought that some medical treatment has been provided, some sort of operation has been done, but the fact is that no treatment was done or no operation was done. Doctor has clearly highlighted that not a single piece of any sort of medicine was given to him. Only he was devoid of the food, given 2 days only water. Later on, normal foods were given. There was no in between food, and in this way, he becomes a normal, a dog for which uh, the mistress, Mrs. Pumphrey, became very much happy and thankful. This is the end of their story. Now you tell me, any one of you, if you have any sort of problem. बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, बोलो तुम लोग, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. No problem. Then leave the class. Only 2 minutes are there. Okay. And I have another class. 12D. No problem. फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. वी विल गो ऑन मीटिंग एंड इन दिस वे स्टडी एंड वी विल बी ऑलराइट. ठीक है रोहित, तेजस, Yes, sir. पीयूष, कोई प्रॉब्लम? Yes, 1 minute एंड बाय एंड गुड डे. ठीक है, बोलो. yes, sir. Should I end? Okay. Less than 1 minute. Okay, sir. Okay, good day.